Okay. So, last class रे हमें male reproductive system विषय रे पढ़िथिले. So, male reproductive system रो किसी question भी करथिले. Hope you attended that session. So, आज ही पढ़िबा female reproductive system. हला. So, जदि हमें female reproductive system को टिके deeply प्रथम anatomical study करिबा अछि. दीटा anatomical study दीटा क्लास जीवो हमर गोटे कंप्लीट anatomical study रे देखिबा बाहर स्ट्रक्चर गुडा को हला देन हमर एक्सटर्नल जेनिटलिया माने vaginal स्ट्रक्चर देखिबा हालाकि सो एई डायग्राम को मु प्रथमे परे आसीबी प्रथमे निजर डायग्राम को जीबा तापर ए डायग्राम को आसीबा ओके सो प्रथमे देखो हमें प्रथमे जो ऊपर जो स्ट्रक्चर देखा जाउछ आपन को तीनटा लेयर अछि ब्लू गोटे रेड सॉरी ब्राउन स्ट्रक्चर ओके रेड एंड ब्राउन पिंक रो स्ट्रक्चर ओके आ गोटे कोन हमर जो स्काई ब्लू रो स्ट्रक्चर ओके तीनटा स्ट्रक्चर हमर यूटेरस रो स्ट्रक्चर एटा और लेयर एटा आसुची हला कि हमें लेयर जदि देखिबा ताहले तीनटा लेयर हमें को विभक्त करूचे गोटे होची मायोमेट्रियम ओके फाइन एंडोमेट्रियम पेरीमेट्रियम हला ए बाहरटा आपन जोटा ब्लू ब्लू देखा जाउची एटा होची आपनकर पेरीमेट्रियम मझी लेयरटा आपनकर मायोमेट्रियम हला आ तळ लेयरटा होची आपनकर कोन एंडोमेट्रियम बुझी हला तो बाहर जो पेरीमेट्रियम टा हमर थीन मेम्ब्रेनस लेयर रहउची हला आ मझीटा स्मूथ थिक मसल रहउची आ एंडोमेट्रियम एटा स्ट्रक्चर ए ऊपर स्ट्रक्चर को हमें फंडस कहउचे एपड तळ स्ट्रक्चर को हमें ए जो ए स्ट्रक्चर भीतर हमें एटा को बॉडी कहउचे आ जते नैरो हे कि जाउची एटा को हमें सर्विक्स कहउचे एपड को नैरो हे कि जो आछे हमें एटा को सर्विक्स कहउचे ए तळ स्ट्रक्चर ए जो ए स्ट्रक्चर कोठी बुझी परिबन जणेबा हला अच्छा हमर ए जो स्ट्रक्चर हम देखिले कि ए एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम आउ कोन पेरीमेट्रियम एटा हमर सब ऊपर भी लेयर रे रहउची एवं साइड लेयर रे भी रहउची सेट पे हमें एठी भी करिचे हला कि सर्विक्स सर्विकल रो दी साइड रे हमें ऊपर को टिके बॉडी पार्ट रे करिचे ओके एटा कनेक्ट होची ओविडक्ट सहित एठी कि ना ओके गोटे सेकंड एठी कि ओविडक्ट सहित कनेक्ट होची ए जाटा फाइन एठी गोटे फिमराइज टाइप रो स्ट्रक्चर करिची ओके फिंगर लाइक जोठी ओवरी टा अटैच हे कि अछि एठी ओवरी और एठी भी ओवरी टा एटा भी ओवरी कहउचे डेटा ओवरी अछि फाइन आ ए जो स्ट्रक्चर टा एठी एटा को हमें एठी आसी कि कोन ओविडक्ट सहित एटा को ओवरी सहित अटैच अछि ए जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर टा हम कहउचे फिमराइज फाइन सो ए जो हमर ओवरी टा यूटेरस सहित लाइनिंग हे कि अछि ओके आमे ताको कहउचे ओवारियन लिगामेंट होउची हला एटा या सहित ए जो हमर कोन ओवरी टा यूटेरस सहित कोन हे कि अछि लाइनिंग हे कि अछि तमे सेटा को कहउचे हमें ओवारियन लिगामेंट आ नॉर्मली बॉडी सहित जोटा एरिया कि रहउचे हम ताको कहउचे ब्रॉड लिगामेंट ओके तो बॉडी सहित सहित अटैचमेंट हे कि रहउचे ओके फाइन सो कोट रहला में हां ए ओवरी सहित कनेक्ट हेची हमर कोन ए जो ओविडक्ट हला ए जो ओविडक्ट हमर एठी न रहइची ओके एटा को हमें फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट पर फैलोपियन ट्यूब भी कहउचे ए ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब रो एंड पार्ट रे हमें कोन ओवरी टा रहउची ओके फाइन आउ ए जो ए पार्ट टा जो देखो छ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एटी अछि एटा को हमें कहउचे फिम्ब्राई जस्ट तार ऊपर पार्ट को वाइडन पार्ट को कहउचे हमें इन्फुडिबुलम फाइन आ टिके एक्सेसरी स्ट्रक्चर रे जोठी हमरो ए देखो ए गोटे थिकन स्ट्रक्चर अछि जोठी आपरकर कोन फर्टिलाइजेशन होई सेटा को हम कहउचे एम्पुला देन ए एम्पुला स्ट्रक्चर थ्रू ए जो हमर ओविडक्ट टिके नैरो होउची सेटा को कहउचे इस्थमस आ इस्थमस और एम्पुला रो जॉइंट जगह तो कहउचे हमें
आम्पुला और इस्थमस कनेक्शन ओके जॉइंट जोटा कोच ओके तो आ कोन रहला थी ए जो इनफुंडिबुलम टा गोटे फनेल शेप स्ट्रक्चर हैला आ हाँ एई जो हमर कोन यूटेरस टा हैला एइठू स्ट्रक्चर हे के आसी ची एटा को हम कहूचे ऊपर पार्ट को हम कहूचे फंडस तळटा को हम कहूचे बॉडी ओके ए जो तळ पोर्शन टा को आ एटा नैरो हे की हमर एठी किना सर्विक्स होची ए जो हम देखु छी सर्विक्स रे दीटा ओपनिंग अछि ओके ओएस माने होची एटा माने कोन कहलो ओपनिंग माउथ ओपनिंग जिम स्ट्रक्चर जिम सेम स्ट्रक्चर गोटे थाए ए इंटरनल ओएस कोटे एक्सटर्नल ओएस कोटे हला ए जो इंटरनल ओएस कोन करूची ना एटा कोन करूची ना सर्विक्स सहित कनेक्ट करूची कास को माने हमर वैजिना को सर्विक्स सहित कनेक्ट करूची आ एटा हमर बाहर जोटा बाहर एक्सटर्नल ओएस ता जोटा अछि सेटा कनेक्ट करूची वैजिना हला एक्सटर्नल ओएस ता को वैजिना सहित कनेक्ट करूची एटा को हमर इंटरनल ओएस ता होची सर्विक्स सहित कनेक्ट करूची एई जो एक्सटर्नल ओएस और वैजिना मिसी की हमर गोटे पूरा कंप्लीटली एट सर्विक्स आ वैजिना मिसी की गोटे बाथ कैनल क्रिएट करछु देखो आउ गोटे कथा हो जो ओभारी ओभारी हम जे देखिबा हला यदि ए ओभारी को हम एठी कि ना गोटे लाइन ये करबा माने बाहर को नवा हला एठी जो लाइनिंग गोडा को ब्लड लाइनिंग गोडा को जाईची हम ए जो ओपनिंग ए जो ओभारी रो ए ओपनिंग टा को हम मेजो ओभारियम हला आ ए पैसेज टा को पेरिटोनियल पैसेज हला प्रति ये जो ओभारी रो ब्लड ये गोडा को जाईची जो गोडा को ब्लड बेसिकली गोडा को जाईची तमे कहूची ताकू हमें मेजो ओभारियम से ओपनिंग टा को मेजो ओभारियम आउ से पैसेज टा को पेरिटोनियल पैसेज हला एठी किछि डाउट अछि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बुझिले जाय तार फंक्शन गोडा को बुझि पारे किछि डाउट अछि बुझि पारला ना नहीं देखो यूटेरस सहित ओविडक्ट कनेक्ट हेची ओके ओविडक्ट कनेक्ट ए यूटेरस लाइनिंग गोडा को हम कहूचे आउटर लाइट को पेरिमेट्रियम देन कोन हमर इनर लाइनिंग टा को हम कहूचे एंडोमेट्रियम आ मायोमेट्रियम हला आ ए जो ओविडक्ट हेची ओविडक्ट एठी हमर लास्ट पूरा कंप्लीटली प्रोक्सिमल एंड रे अछि हमर कोन फिम्ब्री तापर को इनफुंडिबुलम तापर को आम्पुला देन आम्पुला पर को इस्थमस ये आम्पुला इस्थमस रो जॉइंट जगह तो कहूचे हमर कोन आम्पुला इस्थमस का जॉइंट हला ए जो फिम्ब्रेटा को ओवारी को कैरी करी के रखुची आ ए ओवारी टा यूटेरस सहित कनेक्ट हे कि अछि बाय ओवारियन लिगामेंट आ बॉडी सहित टोटल स्ट्रक्चर टा ए कि अछि हमर ब्रॉड लिगामेंट सहित आ ए ऊपर टा को हमें जो ओवारियन रो ऊपर टा कहूचे हम फंडस नेक्स्ट पार्ट टा कहूचे बॉडी आ नैरोयर पार्ट टा कहूचे सर्विक्स एक्सटर्नल ओपनिंग गोटे अछि इंटरनल ओपनिंग गोटे अछि माउथ लाइक ओपनिंग जोटा हम कहूचे इंटरनल ओपनिंग सर्विक्स सहित कनेक्ट करछि एक्सटर्नल ओपनिंग का सहित करछि वैजिना सहित कनेक्ट करछि हैला कि तो ए जो वैजिना सहित कनेक्ट करछि ताको हम कहूचे एक्सटर्नल ओएस आ ऊपर सर्विक्स रे जोटा कनेक्ट करछि सेटा होछि इंटरनल ओएस हैला फाइन सो ए जो वैजिना एवं परे ए जो सर्विक्स दीटा को मिसी के हमें कोन करछंती हमें कोन करछे ना एटा को हमें कहूचे को कैनल ना बाथ कैनल ओके फाइन एति की बुझी हला कि मते को आगो एई टोटल एनाटॉमी स्ट्रक्चर एई जेटा जानि हला ना जानि हला बॉडी रे जोटा सब्जेक्ट अछि सेटा आउथरे जिबी बट ता पूर्वरु मु एई स्ट्रक्चर ता बुझी हला ना बुझी हला आगे सर किछि डाउट अच्छा आउथरे भी कहि दोछ देखो एटा होची यूटेरस रो स्ट्रक्चर लाइनिंग ऊपर भी अछि साइड रे भी अछि आउटर स्ट्रक्चर टा को हमें कहूचे पेरिमेट्रियम मिडिल स्ट्रक्चर टा कहूचे मायोमेट्रियम और तळटा कहूचे एंडोमेट्रियम हैला एई जो स्ट्रक्चर टा अछि एटा कनेक्ट होची कहा सहित ना ओविडक्ट सहित एई जो ओविडक्ट सहित कनेक्ट होची एटा ओविडक्ट कहूचे कि एटा फैलोपियन ट्यूब कहूचे जनरली हमें सबले कहूचे फर्टिलाइजेशन कोठी होची ना फैलोपियन ट्यूब रे होची एग्जैक्ट लोकेशन होची एम्पुला रे हैला किंतु मु तुम कहबी ए टिके ए स्ट्रक्चर जाऊ मु तबे ए फीचर्स ता कहबी एम्पुला रे होची आगुरु थिला एम्पुला इस्थमिक जंक्शन हैला एनसीईआरटी रे थिला
बट एबे आसिला माने एबे एनसीईआरटी रे लिखा है जी एम्पुला रे अछि बट पूर्व एनसीईआरटी देखिबो पुराना एनसीईआरटी एम्पुला इस्थमिक जंक्शन हला बट मोर अप्रोप्रिएट इज एम्पुला ओके फाइन तो जदि एम्पुला इस्थमिक जंक्शन और एम्पुला देछि एम्पुला ही क्लिक करिवो ओके फाइन तो ओविडक्ट एटा ओविडक्ट रा पूरा लास्ट एंड प्रोक्सिमल एंड रे हम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अछि हमर कोन ना त कहू छै फिम्ब्राई ओके ये जो फिम्ब्राई स्ट्रक्चर टा अछि हला ये ओवारी को कैरी करू छै ओवारी यूटेरस सहित जो लाइनिंग रे कनेक्ट हेछि सेटा को हम कहू छै ओवारियन लिगामेंट ओके ओवारी रो टिके ऊपर ए सॉरी हमर ई फिम्ब्राई रो टिके ऊपर को हम कहू छै इन्फुनिबुलम जोटा गोटे फनेल शेप स्ट्रक्चर देन ता ऊपर को रहउछि हमर एम्पुला जोटी फर्टिलाइजेशन हुए एवं एठी ता ऊपर को रहउछि इस्थामस हला ए जो एम्पुलार काम कोन एक्चुअली ए जो एम्पुलार काम कोन एठी गोटे सेकेंडरी यू साइट 2 डिग्री सेकेंडरी यू साइट गोटे डेवलप हुए आफ्टर कोन मेंस्ट्रुअल साइकिल रो 14 डेज पर तार ए जो ओव्यूल टा को ये नै कि आसीबो एठी कि ना एम्पुला को आ एठी फर्टिलाइजेशन हबो हला मु कहबि जेतल मेंस्ट्रुअल साइकिल हम पढियो सेतले एटा को बुझिबो हला कि तो देन तापर हमर कोन होची ए जो जंक्शन टा को हमर ए जो एम्पुला इस्थामस जंक्शन हला आउ ओवारी जो लाइनिंग ओवारी रो ओपनिंग जो अछि ब्लड वेसल्स गुडा को जाईची सेटो काम को जे मेजो ओवारियम आ पैसेज ता को कहू छै पेरिटोनियल पैसेज हला आ तो किछ नै बुझियला तो एबे जो ब्रॉड जोटा हम फास्ट डायग्राम देखते से डायग्राम टे देखाओ एटा होची टोटल हमर एटा एटी देखो एटा इन्फुंडिबुलम अछि एटा ओके फाइन यार ऊपर को अछि एम्पुला ओके एम्पुला ऊपर को अछि इस्थामस आ ए दीटा कर जॉइंट जगह तो को हमर एम्पुला इस्थामस जंक्शन एटा होची इंट्राम्यूरल एटा कहि नथिली सॉरी ए जो इंट्राम्यूरल अछि एटा होची यूटेरस आ इस्थामस रो जॉइंट जगह तो को हम कहू छै इंट्राम्यूरल हला फाइन तापर ए देखो एंडोमेट्रियम एटा होची एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम देन पेरीमेट्रियम हला फाइन तो ए जो फिम्ब्राई लाइक स्ट्रक्चर ता एटा को ओवारी सहित कनेक्ट करछि ए जो ई लिगामेंट को कहू छै हमें कोन ओवारियन लिगामेंट हला जोटा हमको यूटेरस सहित लाइन हे कि रहउछि माने ओवारीटा लाइनिंग हे कि रहउछि फाइन अच्छा ए ऊपर स्ट्रक्चर ता को मु कहितले कोन यूटेरस रा हमको कहू छै फंडस तो ए मझी पोर्शन ता को हमें कहू छै ए जो एटा होछि हमर बॉडी आ तळ पोर्शन ता को हमें कहू छै एटा को सर्विक्स हला फाइन ए पट्टा भी सेम ओके ए जो लाइन लिगामेंट ऑफ ओवरी एटा सेम हला सेम कथा कहू छी हला फाइन देन ए सर्विक्स हमर दीटा ओपनिंग अछि गोटे एक्सटर्नल ओएस गोटे ए सॉरी एटा होछि एक्सटर्नल ओएस एटा होछि इंटरनल ओएस एक्सटर्नल ओएस का से कनेक्ट करू ए सॉरी इंटरनल ओएस का से कनेक्ट करू ना सर्विक्स से कनेक्ट करू आ ए एक्सटर्नल ओएस ता का से कनेक्ट करू एक्सटर्नल ओएस ता वैजिना से कनेक्ट करू ए जो वैजिना एटा गोटे नॉन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर नॉन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर माने कोन जोटी किसी सिक्रेशन हुए ओके एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर ए जो वैजिना आउ कोन हमर सर्विक्स दीटा को मिसी के हमर कोन करछंती ना बाथ कैनाल करछंती बुझी हला ना नै रे आगे सर बुझी पाला तो एनाटॉमी बुझी पाला तो एबे फंक्शन को फीचर्स को जीवा आगे सर फाइन ओके अच्छा ए जो यूटेरस रो ए टिके स्ट्रक्चर देखि तो कोन कहूची ना यूटेरस इज ए single and called womb. It is supported by ligament attached to the pelvic wall. It is periform inverted pier हाँ आउट कथा ए यूटेरस ता गोटे इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर हला पियर ए देखनो यूटेरस गोटे इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर ओके तो पियर शेप इन्वर्टेड पिलिफॉर्म ता कोनते हम इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर upper extended part is called as the body or fundus while the lower cylindrical part is called as the cervix. The cavity of cervix is called cervical canal which along with vagina form the bath canal. कहतली ए जो canal cervical canal ए जो canal टा sorry ए जो canal टा आ ये vagina मिसी के हमरो bath canal कहन हला चलो on internal surface of cervix two types of constrictions okay जो opening कहतली are found are a form of OS cervix
The body of uterus communicates with the cervix through the opening called internal OS. Cervix communicate with the vagina through an opening called as the external OS. Okay. The uterus open into a fibromuscular and non-glandular tube-like organ called as a vagina, that is as a female copulatory organ. Vagina टा कौन ना female copulatory organ, fibromuscular और non-glandular structure. Okay. आमे जदि histology of uterus देखिया perimetrium एटा कोची कौन ना outermost thin layer, myometrium कोची हमर middle layer और thick smooth muscles, longest smooth muscles of the body are found in the walls of uterus during the pregnancy. Okay. Endometrium, it is the innermost and glandular layer. It undergoes the cyclic changes during the menstrual cycle. In the uterus, embryo gets attached to the endometrium. ये जो हमें पढ़ी थिले लास्ट क्लास रे किछि हम तुमको कहिथिली जो हार्मोनल इनबैलेंस विषय रे ईसीपी विषय इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स विषय ये जो ईसीपी टा कोन करे ना ए जो यूटेरस रे एम्ब्रियो जो एंडोमेट्रियम रे लाइनिंग गुडा जते बेले हमर गोटे ओवर कोन हमर ए सॉरी ओवरी रे जते एग आसले ए एम्पुला स्ट्रक्चर रे एतले एटी फर्टिलाइज हला ए यूटेरस रे लाइनिंग गुडा को देखो तुमको ए यूटेरस रे लाइनिंग गुडा को पूरा स्मूथ हो जाए ए स्मूथ लाइनिंग को से कौन कर दिए ना ये जो हमर कोन स्टेरॉइड गुडा को ब्रेक कर दिए तो स्टेरॉइड गुडा ब्रेक कर देले कोन हुए ना कि एटा जो थाय हमर इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव रो काम हो जे से ए जो लाइनिंग गुडा को ब्रेक कर दिए एंडोमेट्रियम रो लाइनिंग गुडा यूटेरस रो एंडोमेट्रियम रो लाइनिंग गुडा को ब्रेक कर दिए से एंडोमेट्रियम रो लाइनिंग जेटू ब्रेक करते तेती आउ बेबी कैरी करि पारे नै हला इट्स नॉट नेसेसरी कल जानि थाओ तापरे the endometrium undergoes the cyclical changes during the menstrual cycle while the myometrium exhibits a strong contraction during the delivery of the baby. Okay, fine. This is the histology of uterus and uterus it is uterus is called as womb supported by the ligament called in the to the pelvic wall piliform inverted pear shaped. Okay, upper part को हमें कहूचे fundus आउ तापर body then lower cylindrical by narrow structure को हमें कहूचे cervix आउ cavity of cervix called as the cervical canal which along with the vagina forms the bath canal. Cervical canal और vagina मिसी के हमरो bath canal होची. Internal cervix से तीटा टाइप रो कंस्ट्रक्शन अछि कोटे OS cervix external OS आउ internal OS एठी जो देखैथिली एटा उटे internal OS हला एटा इंटरनल ओएस आउट एक्सटर्नल ओएस ए इंटरनल ओएस का से तो सर्विक्स से तो कनेक्ट है केसी सो कनेक्शन इन बिटवीन सर्विक्स और एक्सटर्नल ओएस तो वैजिना से तो कनेक्टेड अछि एटी वैजिना ओके वैजिना से तो कनेक्टेड अछि एटा वैजिनल से तो तारो डेवलपमेंट जहां भी किछि हबो तारो सिग्नल इट विल गेट फ्रॉम द एक्सटर्नल ओएस ओके फाइन दिस इज अबाउट द यूटेरस ओके फाइन देन आसो a pair of ovaries is the main or the primary sex organ of a female reproductive system. एक एथरे क्वेश्चन आसुची ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन टिके देखि दवा हला कहिथिले बहुत फास्ट रो कहिथिले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गोडा का कोटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन गोडा का कोटा so a pair of ovaries are the primary sex organ of the female reproductive system. Both the ovaries are located in the abdominal cavity. Okay, पचार जे बेले बेले एक्स्ट्रा abdominal cavity okay. Female secondary sex organ are one pair of fallopian tube. Okay, pair mane dita ovary, so dita fallopian tube, one uterus, one vagina, and one pair of a barbo-uterine gland. Okay, the lateral end of a fallopian tube, which closer to the ovary is funnel shaped, is called as the infundibulum. ये जो कहिथिली जो lateral end रे जोठी हमरा फिम्ब्राई रो ऊपर स्ट्रक्चर टा हला ये जो फिम्ब्राई रो ऊपर स्ट्रक्चर जो जाईची हला ते कोच हमें infundibulum. Okay, then it is the fimbriated and the terminal end bears the aperture called as the abdominal ostium hala ए जो finger like structure to हम कहते abdominal ostium which opens into the peritoneal cavity. Edges of infundibulum passes the finger like projection called as the fimbriae which is helps in the collection of ovum after ovulation. ये जो finger like structure को ovum collection करिवा कोठी छाडिवा ampulla को छाडिवा हला the part medial to infundibulum medial mane पाख nearest okay medial to infundibulum is called as ampulla. Fertilization takes place in the ampulla. A line ta important hala fertilization takes place in the ampulla. Okay,
During ovulation, ova release a peritoneal cavity. During this, it is called as a coelomic egg, जो कोतली secondary oocyte कथा. The cavity of cervix called as a cervical canal, which along with the vagina forms the bath canal. कोई side चीड़ा. On the internal surface of cervix, two types of constrium are found, which form as the OS cervix, so that external OS and internal OS. The body of uterus communicates with the cervix through an opening called as the internal OS, and the cervix communicates with the vagina through an opening called as the external OS. Uterus open into a fibrous muscular non-glandular like structure called as the vagina, or the female copulatory organ. Hala. Both clear hela. एठी देखो कौन कहछि. Same structure एठी देखैछि. हला. Uterine fundus, then एटा होछि body, और एटा जे narrow हे गेला एटा को हम कहछे cervix. एटा होछि cervical canal, एटा होछि vagina, दीटा को मिसी कोन हला ना bath canal. Bath canal, then endometrium, myometrium, perimetrium. Okay. Then এটা হচ্ছে isthmus, এই funnel দেখো funnel shape structure টা আছে. Okay, fine. Ampulla, ভুল কই. Infundibulum, এটা হচ্ছে funnel shape structure. Okay. ହେଲା. তার উপর স্ট্রাকচারটা হচ্ছে ampulla, এটি ফর্টিলাইজেশন हुए আর এটা isthmus, এই জয়েন্টটাকে কোনটি isthmus ampulla joint. এই তিনটাকে আমি কହୁଛି আমি এটাকে fallopian tube or এটা কହୁছে oviduct. Okay. Fine. এটা হচ্ছে ওভারি, এইঠু আমরা কোন কোন এই আমরা ই কলেক্ট করে আর এইটিকে আম্পুলাକୁ ছাড়ে এবং স্পর্ম আসিকে এইটি ফর্টিলাইজেশন করନ୍ତି. ফাইন. এটা আমি দেখিলে হলা কোন কହୁଛି তো ওভিডক্ট. Uterus and vagina constitute the female accessory ducts. Each fallopian tube is about 10 to 12 cm long, extends from the periphery of each ovary to the uterus. The part closer to the ovary is a funnel-shaped infundibulum. The edges of infundibulum possess the finger-like projection called as the fimbriae, which help in the collection of ovum after ovulation. The infundibulum leads to a wider part of oviduct called as ampulla. The last part of oviduct is isthmus has a narrow lumen and it joins the uterus. The uterus is a single and it's also called as womb. The shape of the uterus is like an inverted pear-shaped structure. It is supported by the ligament attached to the pelvic wall. The uterus opens into the vagina through a narrow cervix. The cavity of the cervix is called as the cervical canal, which along with the vagina forms the bath canal. The wall of the uterus has a 3 layer of tissue. The external thin membranous perimetrium, middle thick layer of a smooth muscle myometrium, and inner glandular layer called as the endometrium. এটা কোন কোন কই जो हमर मायोमेट्रियम टा को स्मूथ मसल हला पेरीमेट्रियम टा थिन मेम्ब्रेन एवडा सब टिके टिके जिंस बट यू हैव टू रिमेंबर इट. ओके. The endometrium undergoes the cyclical during the menstrual cycle, which the myometrium exhibits the strong contraction during the delivery of the baby. Fine. The female external genitalia এটা পড়িও আমি হলা এ পর্যন্ত যাইনি হলা কিছুটা কোশ্চেন করো. ওকে. Female reproductive system consists of first question, a pair of ovaries, a pair of oviduct, uterus, all of these. What is the answer? Pair of ovaries. All of the above. Tikke rahilo. Okay, yes. Go. Mo voice asuthala re. Hello. Audible. Yes, sir, audible. कौन हो यार आंसर? Option D. All of these. Okay. Fine. So second question. Vagina of the female reproductive system. It is answer hala. Vagina of a female reproductive system is a primary sex organ, secondary sex organ, essential sex organ, both 1 and 2. So option 3. Konde? Option 3 is correct. Secondary sex organ. Yes, sir. Primary sex organ कोड़ा डाले? Primate ovary. Development of a fetus takes place in quote way. Oviduct. Yes. Oviduct. Oviduct way. Again. चलो. Okay, answer. Any answers? Uterus.
यूटेरस सर यूटेरस देखी को आंसर मते किए कहूची ओविडक्ट ओविडक्ट रे कोन होय रे ओविडक्ट कोटा फर्टिलाइजेशन हबो विडक्ट रे फैलोपियन ट्यूब ना एम्पुलर रीजन रे हां हाँ एम्पुलर रीजन डेवलपमेंट ऑफ fetus uterus देखी को मते लोअर नैरो एंड ऑफ एटा कहथिले जस्ट लोअर नैरो एंड ऑफ यूटेरस कोटा सर्विक्स हां हला तळटा उपरटा त हमर पूरा वाइड एंड स्ट्रक्चर अछि त कमे कहूचे फंडस ओके त नेक्स्ट होची बॉडी देन होची नैरो स्ट्रक्चर त हम कोन कहूचे हम कहितिल बा तीन थर कहलिनी सर्विक्स बोली नेक्स्ट यूनिटरस मिडिल लेयर मेड अप ऑफ a thick smooth muscle is called as कोटा मायोमेट्रियम मायोमेट्रियम हला uterus open into a fibromuscular non-glandular tube-like organ called as सर ऑप्शन 4 टा vagina. हाँ सर Okay. और ये vagina और cervical canal मिसी कौन बनौची? बर्थ कैनल किछटा क्वेश्चन रहि जाइथला मेल रियर देखि तो आटी क्वेश्चन नो एटा माने पैसे ये टाइप रो कोनटा हमरो एई पोर्शन टाको तमे देखनी हला देखो किछ असुविधा नै ओके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन हला पेल्विक रीजन हमर हमें पाउचे हला फाइन एक्सटर्नल एब्डोमिनल कैविटी हमें पेल्विक रीजन में पाउचे हला सर फाइन अच्छा स्क्रोटम रो काम कोन को हमते आगो स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेंपरेचर ऑफ द टेस्टिस अबाउट डैश लेसर देन द बॉडी टेंपरेचर कोन स्क्रोटम रो काम कोन जो स्क्रोटल सैक रेगुलेट करिवो टेंपरेचर को रेगुलेट करिवो टेंपरेचर को कोन पॉइंट है रेगुलेशन टेंपरेचर माने टेंपरेचर रेगुलेशन स्पर्म प्रोडक्शन ओके जनरली स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर्स ए लोअर टेंपरेचर ओके केते डिग्री ना 2 to 3 डिग्री हला 2 to 2.5 और 2 to 3 डिग्री ओके फाइन ओके अच्छा मते कहलो ए जो स्क्रोटम टा जदी हमर सॉरी जदी हमर कोन जो कोन जदी हेलानी डिसेंड डाउन हेलानी क्रिप्टोर्चिज्म कोनटा कोन दी क्रिप्टोर्चिज्म अच्छा और जदी हेलानी हमें ताकू आर्टिफिशियली हमें ताकू कोन करे जे आर्टिफिशियली हमें ऑपरेट करके हमें कोन करू ताकू डिसेंड डाउन करथाउ से जो आर्टिफिशियली डिसेंड डाउन करिथाउ ताकू प्रोसेस ताकू कोन कहै जाय सेटा मने नै सहिला पढितले सिना मन नै हो सर ऑस्टियोपेक्सी चलो okay each testis is dash in shape oval in shape hala oval structure length of a testis is dash in length and width okay 4 ru 5 cm hala testis ର length ଟା ଆଉ breadth ଟା होची 2 to 3 cm okay केतेटा lobules अछि सर 250 अच्छा केतेटा वेसिकल अछि केतेटा वेसिकल अछि कहनी लोब्यूल अछि 250 टा 250 रु 275 टा कोन अछि 250 to 275 अब वेसिकल्स 750 to 1000 okay dash undergo meiotic division to finally leading to the sperm formation कोटा spermatozoic cell or the germ cells तक पहुंच ये एंड्रोजन टा कहां दर सीक्रेट हुई था एंड्रोजेंस टेस्टिस टेस्टिस लेडिक सेल्स अरे वाह हां ए आउ नाही रे बाबा तमरो जो एलटीआर ओएसएस आउ पचारुनी सेंती क्वेश्चन हला भूली जा हां हाउ which is correct pathway of sperms epidermis vas deferens seminiferous tubules और एटेटेस्टिस को मते कोड कोड हे कि जीव को मते सेमिनिफेरस ट्यूबुल देखिছো ए जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल तापर कोठी जीव एटेटेस्टिस रो तापर बास्ट आशा प्रिंस वापांसी परे एपिडिडाइमिस ए देखो स्ट्रक्चर करो स्ट्रक्चर देखले जान परियो
हिस्टोलॉजी कोड गल रे एटा कोनटा थला एटा कोन थला सेमिनल वेसिकल है ना नहीं सेमिनल वेसिकल गला कोठी की रेटे टेस्टिस एटा होची एई जगहटा होची रेटे टेस्टिस हां हला एई जगहटा हला आ रेटे टेस्टिस रो कोठी गला भाषा एप्रिंसिया रो कोठी गला epididymis फाइन हला इमटे क्वेश्चन आसिले मन पके दो डायग्राम टाको हला एटा ओ एटा एक्सटर्नल epididymis ପରେ ତାପରେ ଆସିବ ଭାଷା differential हम्म कोडा गला कोठी अछि क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा जो भाषा एप्रिंसिया ना भाषा एप्रिंसिया पर एपिडेमिस आसो ना ଆଜ୍ଞା ଲାଷ୍ଟ ତାପରେ epididymis ପରେ ए जो ଆସିବ ପୁଣି ଭାଷା एपिडाइमिस कोटे differential मेजर कहिथिली कॉर्पस मेजर एपिडाइमिस तापरे कॉर्पस सेमिडाइमिस तापरे माइनर एपिडाइमिस मन अछि ना नहीं से भूली गलन कोटा मेजर कोटा ये से तीनटा फंक्शन थिला हमरो कोन थिला तीनटा फंक्शन डिकैपिटेशन आ कोन थिला उटा मन नहीं भूली जा कोन थिला फंक्शन कहले एपिडाइमिस रो टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ टेम्पोररी स्पर्म्स स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स तापरे डिकैपेसिटेशन बा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ गोटे कोन थिला यस सर एक्टिवेशन हला कैल्शियम दोची हमरो ए यस जोटे सर कैल्शियम को देखा जाए कैल्शियम टा कोन करछि सेटा को एनर्जी दोची हला हाउ चलो ग्लैंड्स पेनिस इज कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड स्किन इज कॉल्ड एज कोन एटा कोचे फोरस्किन आ गोटे ना थिला फोरस्किन कोन करे सर प्रिप्यूस प्रिपक प्रिप्यूस प्रिपक चलो प्रिप्यूस जा भी हला The male accessory gland include paired A and B and a paired okay. Male accessory gland include a paired gas A and a B and a pair C. Okay. कौन pair of seminal vesicle, prostate gland and a bulbourethral gland. अच्छा. Prostate gland कौन करूची मते कहलो prostate gland कौन कौन रिलीज करूची? Prostate gland कौन रिलीज करूची? सीमेन नो व्हाइट स्ट्रक्चर कहाँ पे देखा जाए बस स्पर्म टा जो सीमेन टा बाहर को आसे सेटार व्हाइट स्ट्रक्चर कौन पे थाए कौन पे देखा जाए प्रोस्टेट ग्लैंड पे ना सेमिनल वेसिकल पे ग्लैंड कोडा को डिस्कस करथिली मन नाही ए देखो एटा थिला स्ट्रक्चर देखो प्रोस्टेट ग्लैंड कौन मिल्की सिक्रेशन नो एटी लिखाई नी एटा व्हाइटिश ये करे हला कैल्शियम फॉस्फेट करे क्लॉटिंग एंजाइम आउ सेमिनल वेसिकल कोन करे फिब्रिनोजेन करे कोआगुलेशन करे स्पर्म्स ए दीटा को मिसी की कोन करन देती फिब्रिनोजेन और क्लॉटिंग एंजाइम कोआगुलेशन करंती तापरे ए जो प्रोस्टेट ग्लैंड रो गोटे फिब्रिनोल प्रोफिब्रिनोलाइसिन बाहर ए प्रोफिब्रिनोलाइसिन ता कोन हुए तापरे कन्वर्ट हुए का को फिब्रिनोलाइसिन और फिब्रिनोलाइसिन ता कोन करे ए जो कोआगुलेशन ता को भांगी दिए डिसॉल्व कर दिए तो डिसॉल्व कर साला परे जाई कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रे स्पर्म गुडा एक्टिव हो जाता मन रख रे भाई भूलू ना भूली जाउ छ देखु ना तापर एते दिन गैप रे होची तथापि भूली जाउ छ हला क्वेश्चन कोठल तापर तो स्पर्म हेड contains an elongated को न्यूक्लियस haploid nucleus हला acrosomal enzyme helps in acrosomal generally helps in the fertilization of ovum okay ये जो एंजाइम गुडा थाए ये फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम रे हेल्प कर secretion of which part are essential for maturation and motility of sperms okay secretion of which part are essential for maturation of motility of sperms motility किए करे जनरली seminal vesicle epididymis और prostate gland हला prostate gland रो कहितले बे जस्ट कहलिबा epididymis रो कोन बारे seminal vesicle कोन बारे और prostate gland रो कोन बारे हला epididymis रे कैल्शियम आयन दिए seminal vesicle कोन करे ओके तो तीनटा रहइबो हला माने एमिति क्वेश्चन तो पचारिबोनी माने एथरो गोटे थिबो ऑप्शन ने हला sperm plus dash equal to seminal plasma okay seminal vesicle जो plasma बारते हम तो seminal function of a male sex accessory ducts and glands are maintained by
मेल सेक्स एक्सेसरी डॉग्स आर ग्लैंड मेंटेन बाय का द्वारा एंड्रोजन द्वारा ही हुए हला which of the following is not a part of a female reproductive system ovary oviduct uterus vas deferens hymen okay कोन ना vas deferens होना नहीं बाकी सब तार को तो मेल हो ए सॉरी फीमेल हो कोन हला ଆଜ୍ଞା sir। अच्छा अच्छा गोटे कथा कहलो ये रहा आसुची क्वेश्चन तो आसीबो अरे हे क्वेश्चन ना भूली गली कि ए सला ओके ओके सॉरी सॉरी 8 इतला ना अच्छा ये 11 नंबर क्वेश्चन टा करो secretion of dash gland also help the lubrication of a penis कोटा रे bulbo urethral gland हला कि अच्छा ए जो ग्लैंड्स पेनिस रे गोटे ग्लैंड था से ग्लैंड ना कोन जोटा गोटे सिक्रेशन दिए जेली लाइक सिक्रेशन दिए ग्लैंड्स पेनिस रे जोटा हमर जनरली किछि माने जो प्रिप्यूस जो फोर्थ स्क्रीन रे जोटा हमर जोटा किछिटा रिलीजन हम काटी दियंती हम बास ये करंती रिलीज बाहर की फोपाड़ी दियंती काहे कि देयर इज सम रिलीजियस फेथ हला सेतरे किछटा ग्लैंड थाए जोटा गोटे सिक्रेशन जेली लाइक सिक्रेशन करे से ग्लैंड ना कोन अच्छा छाड़ो ए जो हमर प्रिप्यूस ता को माने ये कर दियंती माने जोटा हमर फेथ जो रिलीजियस फेथ जो बाहर कर दियंती किबा यूरिन थिक से न बाहरवाटो जो बाहर कर दियंती से जो प्रोसेस ता को कोन कुआ जाय से जो से कौन सर्कमसिजन ना कौन कहते हो से प्रोनाउंसिएशन होनी CIRCUMIS चल ठीक अछि एटा देखो देखो हला सब जाको पीडीएफ रे अछि देखो टिके भलसे हाउ secretion of a dash gland also helps in the lubrication hela bulbo urethral okay primary spermatocyte is haploid primary spermatocyte is diploid hela spermatocyte रो कोन प्रथम हला प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट देन haploid then spermatocyte secondary spermatocyte रो spermatozoa then spermatozoa रो sperm hela then second hela spermatids are transformed into spermatozoa process is called as spermiogenesis hela releasing of sperms from the seminiferous tubule is known as spermiation तो कहिची अच्छा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट्स बिफोर बर्थ फॉल्स हला एलएच अच्छा मते को गोटे कथा ए जो ए लिडिक सेल रो काम कोन ने कहितली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिडिक सेल तो रिलीज करूची एंड्रोजन हां तापरे आ कोन करची जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को आउ थरे भलो रे शुभ रे स्टिमुलेट करते ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को एंड्रोजन प्रोड्यूस करिया पे ओके आ सटोली सेल रो काम कोन नरिशमेंट दो नरिशमेंट को नरिश ओनली नरिशमेंट आ किछ काम नै तार अच्छा ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच एडा को किए बाहर करे रे मेल बॉडी रे मेल बॉडी रे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच को किए रेगुलेट करे किए थायराइड को ये दिए कोन हमरो कोन थायराइड को किए हमरो सिग्नल दिए जे एफएसएच और एलएच को रिलीज करिया पे इनहिबिन ना एटा कोठी के करूची सर्टोली सेल प्रोड्यूस करूची सर्टोली सेल प्रोड्यूसेस इनहिबिन ओके आ कोन एंटी मुलेरियन हार्मोन ए एंटी मुलेरियन हार्मोन कोन रे व्हाट इज एंटी मुलेरियन हार्मोन एएमएच माने कोन कोइनी एंटी मुलेरियन हार्मोन माने जोटा हमरो फीमेल मानक बाके देखा जाय हला एंटी मुलेरियन हार्मोन माने जोटा ब्लॉक करे मुलेरियन हार्मोन को माने फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को जोटा जो हार्मोन को ब्लॉक करता मैं कहूँ एंटी मुलेरियन हार्मोन हला ई सटोल सेल इनहिबिन प्रोड्यूस करछि कोन पई एटा कोन करछि रेगुलेट करछि एफएसएच फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रेगुलेट करछि कोठी रेगुलेट करछि ना थायराइड लेवल करछि ए इनहिबिन ता दी प्रकार थाय ओटा अल्फा इनहिबिन ओटा बीटा इनहिबिन एटा सब को हम जदी कहबा ओटा कोन एटा सब ग्लाइकोप्रोटीन गोडा हला
in case of a female के करूची granulosa हला in case of a male करूची inhibin in case of a female करूची granulosa हला सब लिखिছি टिके पढो केतेबेला हला छाड़ो नेक्स्ट सरला तो एटा सरला function FSH Sertoli cell FSH acts on the Sertoli cell stimulate the secretion of some factor which help the process of spermatogenesis तापर तो एटा हेछि अब नेक्स्ट सॉरी सरला तो एटा एटी तो पढिছে हमको काले नेक्स्ट क्लास रे हम पढिबा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया स्ट्रक्चर ता एटा डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू एंड तापर मामारी ग्लैंड आमे मामारी ग्लैंड ता कोन ओटे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ना सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर मामारी ग्लैंड ता हमर ओटे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ना सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर मामारी ग्लैंड ता होची हमर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर हला सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नो हला भूल लेबे केतले मारिबोनी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एटा ओटे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर हला हाइन क्वेश्चन